बोलते जाओ। क्या यस पढ़ा था मैम। लास्ट पॉइंट, वो तो बोलो। लास्ट पॉइंट क्या था, बोलो। लास्ट पॉइंट था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मैंने ये भी बोला था कि अगर हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका आंसर भी वेक्टर आता है, ठीक है। और ये बताया था द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज obtained by using the right-handed screw rule. Right-handed screw rule means when we use a screw and if it moves from vector p bar to vector q bar, the screw advances in which direction? This is the direction of resultant vector. जैसे कि हम स्क्रू फिट कर रहे हैं दीवार में, तो हम वो एक डायरेक्शन से घुमाते हैं, जैसे जैसे वो अंदर घुस जाता है तो वो जिस डायरेक्शन में जाता है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और हमारा पी बार एंड क्यू बार वेक्टर वो स्क्रू के प्लेन पर, मतलब हम दीवार के प्लेन भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑन द प्लेन ऑफ द वॉल देर आर टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार, एंड inside the wall in which direction screw advances, this is the direction of resultant vector. And when we remove the screw from the wall, there is the direction opposite, right? And that opposite direction is the direction of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्यू बार एंड पी बार। यहाँ पर सीक्वेंस चेंज होगा, पी बार क्रॉस क्यू बार पहले था, बाद में क्यू बार क्रॉस पी बार, ठीक है। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। सेम कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की देखी थी, सेम वैसे भी यहाँ पर है। डिफरेंस कहाँ होगा, बिकॉज हियर इन द डेफिनेशन देयर इज द पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू, अभी क्या है, साइन थीटा है। तो एंगल में जहां पर हमने वहां कॉस लिया था, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी कोई वेटिंग रूम में रहेगा तो मुझे बताओ, 2 मिनट के बाद फिर से मैं स्क्रीन शेयर एग्जिट करती हूँ, लेकिन तब तक मुझे करना ही पड़ेगा स्क्रीन शेयर। सी हियर the characteristics of vector product. Here the commutative law which we already learned, commutative law does not obey, vector product does not obey commutative law of multiplication. p bar cross q bar is not equal to q bar cross p bar, क्योंकि मैंने अभी बताया डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का ये अपोजिट रहता है। Here the magnitude is the same but the direction are opposite to the each other. But the vector product obeys the distributive law of multiplication. Distributive law means here this one also we have already studied. See here, this is the distributive law. A bar cross B bar plus C bar is equal to A bar cross B bar plus A bar cross C bar. This is the distributive law. Then the special cases of cross product, P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta as per the definition. Definition यहाँ क्या है, product of their magnitude and sine of the angle between them. ये sine of the angle हो गया दोनों वेक्टर के बीच में। If theta is 0 means अगर theta angle 0 है, these two vectors are parallel to each other, two non-zero vectors are parallel to each other, their vector product is a zero vector. क्योंकि थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा रेशो क्या आता है, 0 ही आता है, एंड हेंस p bar cross q bar is equal to 0. This is the first characteristics. Second one, when theta is 180 means two non-zero vector are anti-parallel. मतलब एक वेक्टर ये डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में. These are the two vectors which are anti-parallel. Their vector product is a zero vector. यहाँ पर भी क्या आएगा,
उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो वेक्टर ही आएगा, क्योंकि साइन 180 is again 0 and hence p bar cross q bar is equal to 0. Now the next case is that if p bar and q bar are parallel to each other, perpendicular to each other. If p bar and q bar, these are two non-zero vectors, are perpendicular to each other, the magnitude of their vector product is equal to the product of magnitude of the two vectors. मतलब listen once again, if theta is 90, if the two non-zero vectors are perpendicular to each other, ये दो non-zero vector perpendicular है, तो sin 90 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है. तो इसका क्या आता है प्रोडक्ट, scalar vector product of two vectors when these non-zero vectors are perpendicular to each other, then their vector product is simply equal to the product of their magnitudes. P bar की magnitude P, Q bar की magnitude Q, और simply उनके magnitude का product is the vector product of these two vectors. ठीक है. Thus, so I cross J is equal to K. Why this is? See, if two vectors are perpendicular, this is I, this is J, then if two are perpendicular, the direction of their resultant is also perpendicular, and that perpendicular will be K. तीन, अभी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो वो तीसरा उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या है, परपेंडिकुलर ही होगा एज पर राइट हैंडेड स्क्रू रूल, एंड हेंस it should be k cap. Therefore here I cross j is equal to k, or j cross k is equal to I, or k cross I is equal to j. साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान में रखो, आई जे का आंसर के आएगा, जे के का आंसर आई आएगा, और के आई का आंसर जे आएगा. साइक्लिक ऑर्डर में याद रखो, आई जे के ये सीक्वेंस है, आई जे का आंसर के, जे के का आंसर आई, और के आई का आंसर जे, ये याद में रखो. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, देन p bar क्रॉस q bar इज इक्वल टू p bar क्रॉस p bar. क्योंकि दो वेक्टर इक्वल है तो हम q bar के प्लेस पर p bar भी यूज कर सकते हैं, और q bar क्रॉस q bar, and here which is equal to 0. Why 0? Because again here the in the definition sin theta, p bar का p bar के साथ ही एंगल 0, या फिर एंगल बिटवीन q bar and q bar itself 0, and then sin 0 is equal to 0, and hence here the cross product of any vector with itself is 0, and hence I cross I, j cross j, k cross k is 0. कौन से भी वेक्टर का अपने से क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा. Okay, these are the four characteristics. Now we will learn the fifth one also. Just I will check the participant list. So many are in the waiting list. Okay. See the last characteristics. Now we will see. Just 1 minute. I will take the attendance and then go towards the last characteristics. एक ज्वाइन हो रहा है कब से, आयुष घरत. ठीक है. Okay,
We will see the last characteristics. See, I will show you. Here, the last characteristics is how to write the cross product of two vector. How it write? Listen, the cross product of two vector is taken here. P bar is expressed in the terms of its component. Q bar is also expressed in terms of its components. Then here the cross product is taken. Please try to understand. Here cross product is taken. Then Pxi plus Pyj plus Pzk cross Qxi plus Qyj plus Qzk. ठीक है, इसके बाद ये Pxi पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट Qxi को करेगा, ठीक है, फिर ये Px Qyj को करेगा. देखो ये सेकेंड टर्म Pxy I क्रॉस j और ये Px फिर ये थर्ड यहाँ पर देखो Px Qz I कैप k कैप. ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? Just say yes, no, you are listening or not. How I came to know? Let me know, please. You are listening or not? Give reply. Yes, ma'am. Yes, understand. Yes, ma'am. हाँ, तो बताते जाओ कि हम कुछ सुन रहे हैं, हमारा ध्यान है. उसके बाद ये फर्स्ट टर्म Pxi से सेकेंड ब्रैकेट में से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया. देन सी हियर द सेकेंड टर्म Pyj. See here in the third step where I understand that Pyj is also multiplied to the Qxi cap. Then Py is multiplied to the Qy and then Py is multiplied to the Qz. See here the second step. Okay, mute all of you. म्यूट कर लो सब लोग अपने आप को. All of you please mute yourself. See here, then the last term Pzk, that term is also Qxi. See here, Pzqx and that Ki is also taken. Pzqy, K cross J and the Pzqz, K cross K. Now